Okay जी, good evening. So today where should we start? So है ना, जैसे हमने कल बताया था कि like the schedule is Monday, Tuesday, Wednesday. Parimal sir will take class. I think this topic he will start Monday, Tuesday, Wednesday. And I will be taking class on uh, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So these two topic है ना, Parimal sir will teach, and this is also unit 1 of net syllabus as I already है ना told everyone. This is unit 1 part, this and this is unit 1 of CSIR-NET. So है ना, I will start from here, probability, and then remaining part I will be teaching. बाकी जो जैम वाले बच्चे हैं ही कैन ऑल्सो कंटिन्यू हेयर, बट जो लोग एकलव्या 1 या 2 में थे, या जो गेट वाले बच्चे भी जो एकलव्या 1-2 में थे, आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, देयर इज नो इशू है ना. एकलव्या 1 में अगर आप कंटिन्यू कर रहे थे, यू जस्ट कीप कंटिन्यूइंग इन दैट. एकलव्या 2 में है तो उसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं. जो नए बच्चे हैं एंड उनको पूरा सिलेबस लाइव में ही करना, तो वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं. अदरवाइज जो पहले बैचेज में थे एकलव्या 1, एकलव्या 2 है ना, उसमें अगर गेट का भी कर रहे हैं, यू कैन कंटिन्यू देयर, क्योंकि यहाँ चीज़ें रिपीट होंगी. जो एकलव्या 1-2 में स्टैट्स हो चुका है वो अभी रिपीट होगा यहाँ पे. तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम है ना, यू कैन कंटिन्यू हेयर ऑल्सो. बट अगर ऑलरेडी टॉपिक कर रखा है तो यू फोकस मोर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिवीजन है ना. सो यू फोकस ऑन दैट, क्योंकि सिर्फ वीडियोस है ना, ओनली वॉचिंग वीडियोस विल नॉट हेल्प यू टू क्वालिफाई एग्जाम. एंड नोइंग कॉन्सेप्ट इज गुड, देन प्रैक्टिस है ना, लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी बेटर आफ्टर यू डू सम टॉपिक्स. ठीक है जी, तो यहीं से करते हैं स्टार्ट. सो फ्रॉम प्रोबेबिलिटी टॉपिक विल स्टार्ट. So in the basic of probability, you should be familiar with sets, है ना, permutation, combination. These topic are prerequisite for this topic. Sets, है ना, permutation, combination, and some sort of yeah. Okay, so हम लोग यहाँ भी तो अभी जो ये this batch is meant for जैम गेट नेट. जो कॉमन टॉपिक्स है अभी मैं वो पढ़ाऊंगा थ्योरीज में. क्वेश्चंस जैम के भी होंगे, गेट के भी होंगे, नेट के भी होंगे, है ना. सो जो कॉमन कंटेंट है वो एक साथ अभी पढ़ाएंगे. उसके बाद देन बैच सेपरेट हो जाएगा जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसके लिए. ठीक है, तो मेनली हम लोग गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैच कंटिन्यू कर रहे हैं. तो गेट सिलेबस इज ऑल्सो इन जैम सिलेबस, कुछ पार्ट छोड़ दोगे तो. सो अभी मैं कॉमन कंटेंट पढ़ाऊंगा जो तीनों में है, जैम गेट नेट तीनों में है. थ्योरीज तो कॉमन ही है. द डिफरेंस इज एग्जाम क्वेश्चंस, गेट नेट में तो सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं कॉमन टॉपिक पे, नेट में थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो दैट वी विल कवरिंग. और नेट बैच विल बी रनिंग 1 ईयर है ना. सो जैम और गेट का बैच तो जल्दी खत्म हो जाएगा. नेट का कंटेंट वी विल बी है ना डूइंग टिल जून 2025-26. ठीक है, एनीवे तो सेट्स आप लोग जानते हैं. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेट मेनली है ना. आई विल नॉट डिस्कस सेट इन डिटेल, जस्ट व्हाट वी विल नीड है ना, वी विल डिस्कसिंग ओनली दैट. सो थोड़ा सा सेट्स का बेसिक देख लेते हैं. सो मेनली आप लोग जानते होंगे सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, बट वी डोंट नीड दैट डेफिनेशन. हमें चाहिए कि जहाँ यूज़ है, बिकॉज वी आर स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स, उसमें जो यूज, लाइक वी डोंट स्टडी मैथमेटिक्स इन अ वे मैथमेटिक्स पीपल डू, है ना. वी जस्ट नीड है ना सम कॉन्सेप्ट और सम दैट वी नीड ओनली, नॉट एब्स्ट्रैक्ट इन एब्स्ट्रैक्ट वे. सो मेनली जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो ये कि जैसे हम लोग अभी डिफाइन करेंगे इवेंट. इवेंट इज अ सेट, सैम्पल स्पेस इज अ सेट, है ना. सो वी विल वर्किंग ऑन दैट. सिग्मा फील्ड इज अ सेट. ओके, सो पावर सेट दैट विल बी यूजिंग. तो दे आर सेट कॉन्सेप्ट विल बी कमिंग फ्रिक्वेंटली. ठीक है, थोड़े से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, अगर लिखना चाहो डेफिनेशन देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना. सो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये है ना. फॉर एग्जाम्पल जनरली वी विल यूजिंग this notation n, so this will be set of natural number or positive integers. Yeah, you can also write it set of positive integers, ना, set of positive integers, the set of positive integers. ठीक है.
z है ना, this is a set of integer, then we will be using q as set of rational number, this notation will come frequently, and r set of real numbers, then q dash you can write, q dash is a complement of q which is r minus q है ना, so q dash which is set of irrational number, okay. These are some well defined sets है ना. So natural number में क्या क्या आएगा, so actually the natural number meant for 1 2 3 dot 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 है ना, set of integers, you know, 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. How do you define set of rational number? So it's actually set of p upon q where pq are integers and q is नॉन जीरो है ना. सो ये सब आप जानते होंगे ऑलरेडी. जैसे एक बार बेसिक में बता देता हूँ. इसमें मेनली हमें क्या जरूरत पड़ता है, लाइक है ना, वी राइट ए और बी, सो वी नो इट्स ए यूनियन बी. वी राइट ए एंड बी आर सेट्स, सो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी. A but not B, it means A minus B, or you can write A intersection B complement है ना. और आई होप इसका डेफिनेशन आप जानते होंगे. So it is set of X such that X belongs to A or X belongs to B. This is set of X such that X belongs to A and X belongs to B. So or is related to union and is related to intersection. Okay. And this is A but not B. Similarly, B but not A. So this, you know, B minus A, or you can write B intersection A complement. Achha, what? No, so here you can write X as that X belongs to A but X does not belong to B. ये complement आप लोग जानते हैं. There is a universal set, है ना. So in our probability theory, universal set is actually sample space. So complement is not in that, है ना, not A or A complement. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर यूनिवर्सल सेट, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आगे वैरी करेंगी. ठीक है, लाइक एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, सो इट मीन्स ए माइनस बी, इट मीन्स ओनली ए, और बी माइनस ए. दिस इज एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, है ना. और यू कैन राइट इन अदर वे. So this is something like also A union B minus A intersection B. These two are equal sets. Okay. You also neither A nor B. If you write neither A nor B, so in set theory it represents neither A nor B, है ना, not A and not B. Or you know, I think of De Morgan's law, and that's A union B whole complement. So complement I'm writing this way, है ना. So these are some well known, है ना, operation on sets that you know. So union, intersection, difference, है ना. I think this is called symmetric difference kind of, है ना. This is symmetric difference. So है ना, more of just like, you know, number of element in a Venn diagram आप सब जानते हैं. So मुझे लगता है Venn diagram बताने की जरूरत नहीं है. So suppose this is A, this is B, this is A set, B set. So अगर मैं लिखूंगा यहाँ से, so this full portion, red portion, it represent A union B. So this is A union B, you all know. इसमें कुछ खास तो है नहीं, ठीक है. So ये जो red portion से मैं सेट कर रहा हूँ, दिस इज A union B. बाकी आप लोग जानते हैं, जैसे
ये ए है और ये बी है. सो अगर दूसरे कलर से हम सेट करें, सो दिस पोर्शन इज एक्चुअली, सो दिस पोर्शन इज ए माइनस बी. ओके, ये जो पोर्शन सेट किया हमने, अगर दूसरे कलर से देखें, सो ये जो पोर्शन है, अगर आप ये देखेंगे, सो दिस इज, so this portion is b minus a. Okay, and this was a minus b, and this portion is a intersection b. इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ. सो दिस इज a intersection b. ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, दिस इज a intersection b. ठीक है, तो ये सब आप जानते होंगे ऑलरेडी. सो दिस इज a intersection b एंड ऑल थ्री आर डिसजॉइंट सेट, है ना. सो डिसजॉइंट का भी डेफिनेशन जानते होंगे. ये सब वर्ड यूज होगा, डिसजॉइंट सेट. सो यू नो टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट. टू सेट, या मैं इधर लिख देता हूँ, है ना. सो यहाँ टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट if and only if a intersection b is empty set. No, there is nothing in common. So this is a intersection b. अगर ज़्यादा होगा तो disjoint set के, if you have more than two sets, then there is a concept of, if you have more than two sets, then there will be, है ना, concept of pairwise disjoint. And so this word will be using repeatedly, pairwise disjoint, and one is mutually disjoint. Okay, so the reference is, suppose or let a1, a2, an are n sets. So here n I'm considering more than 2. So mainly, relevance of these two words are different when number of sets are more than 2, and these two will be same in case of two sets just. So when n is more than 2, so these two words are they are different. So what is meaning of pairwise disjoint? So this sets a1, a2 dot 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 an are pairwise disjoint if and only if sets a1, a2 dot 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 an are pairwise disjoint if and only if ai intersection aj is empty set for all I, है ना, for all I distinct than j more than equal to 1 less than equal to n. Okay, so means you choose any two set at a time, there will be nothing common in them. You choose any two set out of these, there will be nothing in common. And a mutually disjoint word, we mean sets a1, a2, an are mutually disjoint if and only if just a1 intersection a2 intersection a3 intersection an. This is phi. So intersection of all taken at a time, and if it is empty set, then we say it is mutually disjoint sets. Okay, so this makes sense. Definition clear है, देख लीजिए. So pairwise and mutually disjoint का definition. So हम लोग अभी set theory, we are discussing basic set theory. Okay, that we will be using in probability course. Okay, so this was just some diagram. You know, this the white portion here, this will represent, if I color this, so these portion are actually, this portion if you see outside both, this is neither a nor b, you know, and this portion is actually neither a nor b. This portion is neither a nor b, है ना. ये सब आपके लिए बहुत बेसिक है, you know already all this thing, and ये सब भी आप जानते हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, ठीक है. जैसे जैसे क्वेश्चन 1 है. सो ए इज
1 2, B is 2 3, C is 3 1, ठीक है. दे आर, जैसे ऑप्शन ए लिख दूं, पेयर वाइज डिसजॉइंट. ऑप्शन बी म्यूचुअली डिसजॉइंट. तीसरा बोथ पेयर वाइज एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट. एंड चौथा नाइदर पेयर वाइज नॉर म्यूचुअली. व्हाट कैन यू से? This is a basic understanding, है ना. Now we are saying it sets. Later we will say it event, है ना. So these are event, mutually disjoint event, pairwise disjoint event. So currently we are saying it set, है ना. These are sets actually. So the next question I will form is this one. So what will be difference? So instead of taking it 3 1, we'll take it 3 4. Let's say it is 3 4. So these are, बताइए जी, आप लोग आंसर में चैट में बता सकते हैं. There are 4 options to question 1 and there are 4 options to question. Very very basic question, है ना. I think all of you will be able to answer this. Quickly tell the answer. So A contain 1 2, B contain 2 3, C contain 3 1. Then you have to tell it is pairwise disjoint, mutually disjoint, both or neither. Here A is 1 2 2 3 3 4. It is 3 4. So then you have pairwise disjoint, mutually disjoint, both pairwise and mutually, neither pairwise nor mutually. It's a basic set theory that everyone can answer. So those who know the answer, please tell. In chat you can write just options और अनम्यूट करके बता सकते हो आप. चैट में बताइए जी क्विकली, आसान है ना. तो यहाँ डेफिनेशन है, जस्ट हेयर है ना, डेफिनेशन है, आप सिंपली बता सकते हैं जैसे बताया लोगों ने. सो आप यहाँ चेक करेंगे. सो ए इंटरसेक्शन बी इज 2, राइट, ये 2 आ गया. बी इंटरसेक्शन सी इज 3, सी इंटरसेक्शन ए इज 1, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 5. सो मीन्स इट इज म्यूचुअली डिसजॉइंट बट दे आर नॉट पेयर वाइज डिसजॉइंट. ठीक है. सो दे आर नॉट पेयर वाइज डिसजॉइंट. तो ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है, पेयर वाइज नहीं है. ओके देख लीजिए. 2 का भी बी है. ओके सो अब यहाँ पे A intersection B is again 2, B intersection C is B intersection C is 3, C intersection A is empty and A intersection B intersection C is 5. Okay, so again ये तो म्यूचुअली तो है ही, म्यूचुअली डिसजॉइंट. पेयर वाइज होगा क्या? सो ये नॉन एम्प्टी है. द डेफिनेशन सेज it should be empty for all distinct, but it is not empty for all distinct, है ना. So it is not pairwise. So again it is also mutually. Okay, I think same ही आंसर दोनों का. देख लीजिए, चेक कीजिए, और किसी को डाउट है तो पूछिए. दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है. पेयर वाइज डिसजॉइंट होने के लिए ऑल 3 सेट्स को डेफिनेशन देखिए. So all sets are pairwise disjoint if intersection is 5 for any I distinct than j. So you choose any pair, there will be nothing in common. But here it is, है ना, AB has something in common.
So that's why it is not pairwise disjoint. One more question, hai na? So like question number 3, if I write A is 1, 2, B is 3, 4, C is, let's say 5, 6. This is very easy question. So again, A is, these sets are pairwise disjoint, mutually disjoint, both and D neither. Both pairwise and mutually disjoint. Okay. So neither this nor this. है ना? So again, you can see simply, you just have to check. Okay. So you can simply notice A intersection B has nothing common, B intersection C has nothing common, C intersection A has nothing common, right? So they are pairwise as well as, है ना? So they are both A, B, C, है ना? So है ना, when MSQ questions comes, it will be directly A, B, C all. Because I'm writing in case of है ना, MSQ questions, multiple select. So more than one options. Okay, one more question I will write. Then we'll conclude which one is the stronger conditions. So like A has, let's say 1, 2, 3, and B has. So last question what we have seen, it was pairwise, not pairwise but mutually disjoint. Next question was also mutually disjoint but not pairwise. This one is both. Okay, so suppose I write like this. Okay, again you have similar options. So okay. Neither pairwise nor mutually disjoint. Okay, so this is neither pairwise not mutually. So question is, can we find a set where it is pairwise disjoint but not mutually disjoint? Can we find sets where they are pairwise disjoint but not mutually disjoint? Is it possible to find? No, sir. No, right? So the, because you know the condition, if you take pairwise, like if I come to definition, you choose any two at a time, there is nothing in common. So when you take all at a time, obviously there will not be any common. So this will imply this. Okay, so when you have a pairwise disjoint sets, obviously that has to be mutually disjoint. But if it is mutually disjoint, does not guarantee they are pairwise disjoint, right? So the conclusion is, so one theorem is there and that you can easily understand or prove also. So the theorem says pairwise, so pairwise disjoint is stronger condition in sense of disjoint. So pairwise disjoint sets are also mutually disjoint, also mutually disjoint, है ना?
but converse is not necessarily true. Okay, means if it is mutually disjoint, it cannot guarantee, it does not guarantee for pairwise disjoint. It is fine. So that's why we are making few examples to understand. So if it is pairwise, it will be mutually also. If it is not, है ना? So we can write this theorem in other way also. In other way, if I write, so in the other way, if I write the same theorem, so you know contrapositive statement. Statement P implies Q. This is equivalent to a statement not Q implies not P. For example, you know differentiable function is continuous. So equivalent statement to that can be made like not continuous function are not differentiable. They are same statement. In the similar way, if I write, so if sets, for example, a1, a2, dot 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 an, where n I'm saying more than 2, okay, they are not mutually disjoint. They are not mutually disjoint. So they are not mutually disjoint. So means something is common in all, right? So obviously it will tell then a1, a2, an are not pairwise disjoint. So any if then statement can be written in two ways. Any if then statement. If P then Q tells equivalently, if not Q then not P. So you have some sets which are not pairwise disjoint. So obviously it cannot be, which are not mutually disjoint. So it cannot be pairwise disjoint also. It will not be pairwise disjoint also. You can make some. These two are equivalent statement. Okay, so this was just basic theory of disjoint that we will be using. You know, in definition of probability, the third axiom says, so if you have pairwise disjoint sets, then probability of union is equal to sum of probabilities of each event. Okay, let's come to counting. So in counting, if we come, so there is a rule called addition rule of counting. Okay, and there is a rule called multiplication rule of counting, right? There is another rule called, because counting will be used in case of finding probability using classical definition of probability. So multiplication rule of probability, not probability, counting, and probability will come later. So we are just doing basic things, sets, counting, thus we are discussing multiplication rule of counting. So what is the addition rule of counting? So it is like you have to do two work, but not both actually, either of the two work. And first work can be done in m ways, second one can be done in n ways, and you have to do either of the work, not both. So then that can be done in m plus n ways. For example, like you are given an offer, okay, so you go to a shop, है ना, and you can purchase, like there are 5 shirts and 4 pants here, or in sense of other, if I say there are ice cream, 5 type of ice creams and 4 type of chocolates, and they say you choose one ice cream or a chocolate. So how many options you have? So suppose I said 5 ice cream and 4 chocolates, different 5 different flavors of ice cream and 4 different flavors of chocolate, for example. So you have 9 options now, right? So this is addition rule of principle, addition rule of counting, so it says what? So suppose work one, job one, anything you can write, है ना? So here I have to write something. So let me say job one, or some selection is also a job. So let's say job one or work one, है ना? यानी से task one, है ना? So चलो अभी work ही लिखता हूँ.
work 1 can be done in m ways and work 2 can be done in n ways. Okay, so there are two work you have to do, work 1 and work 2. So work 1 can be done in m ways, work 2 can be done in n ways. And so you have to do, or we have to do either of the work. We have to do either of that work and not both. So here what we are saying, we don't have to do the both work, either first work or second work. Then total number of way of doing that work is m plus n. Is it fine? Check. This is the addition rule of counting. So work 1 can be done in m ways, work 2 can be done in n ways. You have to do either of that work, not both, either. So it's either work 1 or work 2. Then the total number of way of doing that work is m plus n. What is the addition rule of counting? So it is similar, just you have to do both works simultaneously. So what is the this multiplication rule of counting? So it's like number of way of doing work 1 intersection work 2. Both you have to do simultaneously or one by one. So what is the total number of way? So again, in a similar way it will be done. So let me copy this statement. So suppose work 1 can be done in m ways, work 2 can be done in n ways. We have to do both work simultaneously or one by one, simultaneously or one by one. Then total number of ways of doing that is m into n. For example, like I said, you are given an offer that go to a shop, there are 5 type of ice creams and 4 type of chocolates. And initially I said you choose just one of them, either one chocolate or one ice cream. So you have total 9 options or 9 number of way you can do that. So 4 plus 5 because of or. So you have to do addition there. But now if I say you have the offer, there are 5 type of ice cream, 4 type of chocolates. You choose one ice cream and one chocolate, both. So offer is one, you choose one ice cream and one chocolate. So how many total number of way are there to have different combinations of chocolate and ice cream? So how many way you can do that? So you have 5 choices of ice cream and 4 choices of chocolates. So 4 into 5, you have 20 different pairs you can make, like chocolate 1 ice cream 1, like chocolate 2 ice cream 1, chocolate 3. So if you make, there are total number of combination or total number of way you can do both is actually 5 into 4 20. So in the first way there was 9 ways, in the second way you have 5 4 are 20 ways. ठीक है जी? Like pant shirt का example लिया जा सकता है. So you have 5 shirts, 4 pants, you want to wear one shirt and one pant. So what is the total number of different dress combination you can make? So there are 20 dress combinations. Okay. So later it will be converted into addition rule of counting and multiplication rule of counting. So okay, I think you know definition of permutation combination. So basic I'm just discussing permutation. So we are just doing linear permutation, mainly it's permutation. Okay,
permutation and combination. So question is, what is definition of permutation and what is definition of combination? Anyone would like to define? What is definition of permutation? How do we define permutation? Yeah. Arrangement of numbers. Yes, arrangement of numbers or objects, right? So it is arrangement of objects, है ना? So in mathematics science, everything is object, like, है ना? So almost it is arrangement of objects. So number is also object. So it is arrangement of objects in which order of object matter, right? Arrangement means order of object will matter. Order of objects will matter, or it is important, है ना? And what is combination? Selection. It's a selection where order will not matter. Example, for example, like I want to choose two out of, है ना, like here, है ना, students, like I have 50 students, I want to choose two students from there. So if I choose A and B, or if I choose B and A, so in sense of permutation they are different. In sense of permutation, A, B and B are different. In sense of combination, A, B and B are same. Like in case of digit, if I make 1 2, it is 12. I make 2 1, it is 21. They are different, so it is permutation. But like I say, I'm selecting team of 2 person out of 50. So I select A and B. A is person, B is a person. So A and B in a team, or if I make a team of B and A, so it is not different team, it is the same team, right? So whether you say it is a team of A and B, or it is a team of B and A, so it is the same team, so they are not different, so it is combination, right? So combination is actually, it is selection. It is selection of object where, yeah, in which order of objects will not matter. This is in my definition. You can see in my way. You can see definition in books. So like I said, example. So example, like you have 1 2 3. There are 3 digits, and I will say you to make. So total number of 2-digit number that can be formed are, number is, है ना, कितने नंबर बना सकते हैं हम लोग? It will be 6, right? अगर मैं 2-digit नंबर बनाऊं, total number of 2-digit numbers that can be formed is 6, and are, what are that number? And those numbers are like 1 2 2 1, I was saying, है ना, it's a 3 1 1 3, then 2 1 and, अच्छा एक मिनट, 3 2 2 3 and 3 2, right? ये हो गया. So there are 6 numbers. But in the other way, if I say कि there are 3 person, I was saying there are 3 person, A, B, C are 3 person, है ना? So A is Abhinav, है ना? Any name you just take 3 names, and you have to make, so total number of teams of 2 people, है ना? Total number of team of 2 person is just 3. It is, or that can be formed, है ना? That can be formed is just 3. And what are that? And that are, it's a team of AB, team of BC, and team of AC. Okay, so आपको ये समझ आ रहा होगा. So team of AB, BC, AC. So it's a team of AB or BA. It is same. So they are not different, AB and BA. So first one is the example of permutation. Second one example of combination. Okay, ji.
So where order matters, like 1 2 and 2 1, digits are 1 and 2 only, but position matters, है ना? Order of object matters. So 1 is first and 2 is later, so it is 12. 2 is first, 1 is later, is 21. They are different. So here order is important, so it is permutation. And AB and BA, team of AB and BA, they are same, so it is combination. Example of combination. Okay ji. So you must be knowing this notation NCR, है ना? Or we also write N choose R. And you will be knowing NPR. So I think permutation we defined first, so we should write NPR first. NPR. So what is the meaning of NPR and what is the meaning of NCR? What is the definition of NPR? And what is meaning? So how do we define? NPR represents what? P for permutation, C for combination, right? This P is for permutation, this C is for combination. Anyone would like to define? N factorial by n minus r factorial. Yes, it is a formula, right? So what is the interpretation? When will we be using this? In word problems or in counting problem? How will we decide whether we have to use NPR or we have to use NCR? How do you decide? When जब क्वेश्चन अरेंजमेंट का होता है तो हम परम्यूटेशन करते हैं आउट ऑफ एन अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स. जैसे हमें पता चलेगा कि आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स सेलेक्टिंग 5 बॉयज 5 गर्ल्स ऐसा कुछ आया तो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. राइट. तो इसका जो मीनिंग है, इट्स अ टोटल नंबर ऑफ permutation. P is permutation. Permutation means arrangement. Combination means selection. So total number of permutation of n distinct objects. So here objects must be distinct. So permutation of n distinct objects taken R at a time means total number of permutation of R objects, n objects taken R at a time, है ना? So total number of permutation of n distinct objects taken R at a time. मतलब n objects आपके पास है, उसमें से R को ही arrange करना है. जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं अभी. So and that formula you know, so हमें इसमें ये formula जो NPR का है, ये होता है n factorial upon n minus r factorial. This is also like n minus 1. ये कहाँ तक जाएगा? So it will run till n minus r plus 1 तक जाएगा. अगर आप खोलोगे इसको यही आएगा. So it will be n minus 1 and this. इसका एक एग्जाम्पल अगर लिखूँ मैं, चलो यहाँ पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, फिर हम दोनों का एग्जाम्पल लिखते हैं, तो आपको समझ आएगा. n choose r, ये नोटेशंस बुक में यूज होती हैं, वो भी है. So it is a number of total number of combination, total number of combination of n distinct objects. So distinct object must be there, है ना? Total number of combination of combination means selection where order will not matter. Permutation means arrangement where order will matter. So total number of combination of n distinct objects taken R at a time. Taken R objects at a time. So obviously it will be distinct also because they are distinct. R distinct object at a time. So you can also add R distinct object without repetition. So they are actually without repetition. So distinct will be there. Here is also without repetition. So when you select R object out of n, so total number of ways NCR, but in that n objects must be distinct and the R object you are choosing also must be distinct. Out of n objects you are arranging R of them, so n objects must be distinct and the R you are arranging also must be distinct objects, not identical. You cannot repeat actually. So it's without repetition. Okay, for a simple example, one just I'm writing few question. Let's say question 1. So there are 10 students and मान लो 4 chairs,
है ना, या ऐसा लिखो, पहले 10 यहाँ ख़त्म करता हूँ. सो ओनली 4 स्टूडेंट्स ठीक है, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं. ओनली 4 स्टूडेंट्स इसको मैं ऐसे बनाना चाह रहा हूँ, मतलब है ना 4 चेयर्स आर देयर मान लो, है ना. तो इन अ रो चेयर्स आर अवेलेबल, मान लो ऐसा. मैं अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन बना रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए. सो अवेलेबल, ठीक है. इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेक पीपल सिट ऑन दैट, आई थिंक SIT होगा ना, तो ऑन दैट चेयर, ठीक है. Four distinct chairs are there and 10 distinct students are there. तो ये थोड़ा वो हो जाएगा नहीं. क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? कॉम्बिनेशन है सर ये तो. आंसर निकालिए क्या आएगा. हाँ जो भी है, आप ज़रा दिमाग लगाइए और आंसर बताइए आप लोग क्या होगा. 210. 210. चलो एक ऑप्शन है 21. देखो टोटल 10 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट को ही चेयर पे बिठाना है. चेयर एक लाइन में है ना, इन अ लाइन, अवेलेबल इन अ लाइन, ठीक है, एक लाइन में है, क्योंकि सर्कुलर परमुटेशन भी आएगा. सो अभी हम लीनियर परमुटेशन की, व्हेन वी से जस्ट परमुटेशन इट इज लीनियर परमुटेशन, है ना. In a line, in how many way we can make people sit on that chair, yeah, chairs, and chairs are distinct, and people's are students are also distinct. There are 10 different students, there are 4 distinct chairs or labeled chairs. बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है, जरा ट्राई करके बताइए क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है. सर 210 ही होना चाहिए. तो होना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे, पहले तो 10 स्टूडेंट है, अब मुझे 4 को ही बिठाना है. सो एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि ठीक है भाई, 10 में से 4 स्टूडेंट को चूज कर लो. एंड अच्छा, इसका फॉर्मूला तो लिखा नहीं है, इसका फॉर्मूला जो होता है दैट यू नो, ये जो NCR का फॉर्मूला है, NCR का फॉर्मूला क्या होता है जी. सो आप लोग जानते हैं NCR का जो फॉर्मूला है, ये होगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. अच्छा फैक्टोरियल आप लोग जानते होंगे राइट. सो फैक्टोरियल बताने की ज़रूरत है. फैक्टोरियल लाइक है ना, n फैक्टोरियल कई बार ऐसा रहता है कुछ जगह ये नोटेशन, दीज आर नोटेशन. सो ये होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक का प्रोडक्ट, या n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू, है ना, 3 2 1 1 तक का प्रोडक्ट, ठीक है ना. ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कह सकते हो. सो वन कन्वेंशन इज दैट 0 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है. सो दैट इज द रिमार्क. बाकी ठीक है. सो 0 फैक्टोरियल विल बी 1, फिर n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है. तो वैसे यहाँ से भी जस्टिफाई कर सकते हो, ये अगर आप n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखोगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1, या उल्टा लिख दें, एक मिनट, हम लोग क्या कर रहे हैं, n माइनस 1 ना, n फैक्टोरियल अपॉन n, राइट. सो व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा, n को अगर 1 रख देंगे तो. तो ये मेनली जो डिफाइंड है, इट इज़ डिफाइंड जस्ट n फॉर नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, यही ना. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और फर्दर भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ब्रेक कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से. सो n माइनस 1 है ना, आप यहाँ तक गए, मान लो n माइनस r प्लस 1, और साथ में फिर लिख सकते हैं n माइनस r फैक्टोरियल. तो ये भी कर सकते हैं ना, इधर से वैसा लिख सकते हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है. सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है. आगे देखो. तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, तो एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि 10 में से 4 लोगों को चूज कर लो, एंड द 4 पर्सन कैन बी अरेंज्ड ऑन अ चेयर. कितना जानते हैं आप, कितने तरीके से,
4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो ये है, एंड दिस इज नथिंग बट एक्चुअली इफ यू सी 10p4 है, इज इट सेम ही तो है, देखो आप ध्यान से। तो कितना आंसर आएगा, 10p4 निकाल लीजिए, यही है। सो वैसे लिखेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, सो 10987। आप लोगों ने कैसे किया बताइए? सर 5040 आएगा शायद। है ना, हाँ सर 5040 आ रहा है। ठीक है ना। देखिए बताइए जो 210 किस लॉजिक से बताए थे, देखिए ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए थे, कोई किताब का नहीं है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग जस्ट इसको फ्रेम। 210 तो उस कॉम्बिनेशन से आएगा, बट ये परम्यूटेशन से 5040 ही आएगा। ठीक है, ये आया होगा 210 ऐसा, ओके यस सर। ठीक है। तो यहाँ सिलेक्शन किया आपने, जैसे जिन लोगों ने कोई बात नहीं ट्राई किया, इट्स गुड। तो आपने क्या सोचा कि 10 लोग हैं, 4 लोगों को चूज करना है ना। सो जैसे हमने पूछा है कि हाउ मेनी वे वी कैन मेक सीट ऑफ देम, कितने तरीके से उन 4 लोगों को हम बिठा सकते हैं। तो पहले 4 लोग चूज करेंगे, फिर उनको बिठाएंगे। तो बिठाने में तो अलग अलग कॉम्बिनेशन लगा, परमुटेशन वो अरेंजमेंट लगाया जा सकता है। सो इस तरह से है, ठीक है। सो पहले आपने यहाँ पे क्या किया, 10 में 4 लोगों को चूज किया। अच्छा वैसा होता कि लाइक देर आर 4 वैकेंसीज एंड वी आर, अगर यही क्वेश्चन मैं दूसरे तरह से लिखूं कि देर आर 10 पीपल केम फॉर वॉक इन इंटरव्यू, देर आर 4 वैकेंसीज, सो हाउ मेनी वेज दैट सिलेक्शन कैन बी मेड। सो वो क्वेश्चन बदल जाएगा फिर। जैसे मैं यही क्वेश्चन अगर लिखूं मैं दोबारा, सो इफ आई राइट इन अदर वे, कि जैसे इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट दूसरी तरह से लिखता हूँ एक क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज, है ना, सो मान लो सपोज 10 कैंडिडेट, है ना, अपीयर्ड फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू, है ना, इफ 4 seats are there or 4 vacancies are there, 4 vacancies are there, so how many ways selection can be made? अब यहां समझिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बदल गया। अब आप सोचिए कि 10 लोग हैं, उसमें से 4 लोगों को चुनना है मुझे। तो यहाँ ऑर्डर मैटर करेगा, वहां ऑर्डर मैटर करेगा, क्योंकि मुझे चेयर पे बिठाना था ना। तो 4 डिफरेंट, चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4। सो इन हाउ में, इन विच पोजिशन यू, है ना, मेक्स इट 4 पीपल, दे आर डिफरेंट एक्चुअली, पर्सन 1 2 3 4 और पर्सन 2 3 4 1 लाइक दैट। तो फर्स्ट यू चूज 4 पीपल, देन यू अरेंज देम। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट। सेकंड इज there are 10 candidate appear for walk-in interview, so there are only 4 vacancies, so some, है ना, 4 out of 4 4 out of 10 will be selected. So what will the answer here? 210. Now it is 210, okay. So it's a 10c4, so its order does not matter, like any 4 you choose. So here is just you have to choose 4 person out of 10, any 4 you choose, their order will not matter because we need 4 people, it's like a team or a na. So you just answer here is 210 actually, but here was arrangement कि first you select then you arrange. So you write this or you write this, है ना, you can here just compare. So if you multiply, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या पता चलेगा कि NCR NPR में क्या रिलेशन है. So remark you can note is NCR into R factorial, so that will be equal to NPR, right? NCR into R factorial, so that will be R factorial time NCR is NPR actually. सर Yeah. सर ये क्वेश्चन सेकंड में सपोज दैट कि और एक्स्ट्रा रहता है कि इसमें मेरिट भी बनना है, तो फिर डिफरेंट मतलब कि नंबर ऑफ वेज इन विच हाँ. मेरिट कैन बी फॉर्म, तो फिर वो एनपीआर हो जाता Yes. अगर रैंकिंग होती, मान लो होता कि स्टूडेंट्स विल बी रैंक्ड बेस्ड ऑन मार्क्स फर्दर, so just we said 4 students are selected, what is the number of way of selection, so what is the total number of combination of people can be selected. Now further if they say कि students are ranked based on marks, so then what are possible ways, so in that case then ranking होगी. तो further when ranking comes means position will differ, then counting will differ, so we have to count all positions, then answer will be that. Yes,
if they give you marks and then you rank them, so based on ranking, there will be different, then that same answer will come now. Okay, sir. Yes. Okay, I think so this is fine. You know a few results, I think directly. NC0, NCN will be 1, right? You know NC1, NCN minus 1, this is N. Further generalized NCR, NCN minus R are equal. Okay. And the fifth one, if I write, if NC some example K is equal to NC some example here is B, for example. So instead of K, let me write A. So NC A, AB are just integer, positive integer. So then what will happen? So either A is equal to B or A plus B is equal to N. These are few results. There are more results on NCR. Just basic I'm discussing, that will be using in question solving. Okay. So next is somewhere just like you will see somewhere people also write it PNR notation, and PR is also written like PNR. There are few questions like, so just I'm writing one question. So, in case of binomial distribution, NCR will come frequently. In that case, for example, some questions comes where it will be like NC10 is equal to NC8. Then the first part is what is the value of N. The second part is what is the value of N, choose N minus 1, like ऐसा पूछ लेगा. ये तो ऐसे है ना, ये आ जाएगा जैसे मान लो कि 3, इसकी वैल्यू क्या होगी. Some different questions can we make. तो ये सभी न्यूमेरिकल आंसर टाइप छोड़ो, ये सब तो निकाल लोगे. सिंपली द वन लाइन क्वेश्चन इज if NC10 is equal to NC8, then what is the value of N? N is what? It is numerical answer type, for example. So I think it's easy. 18. And it's easy. So 13. right, yes. So we have just seen here either A or B will be equal or A plus B will be N. And there are just two options you have. So either A will be equal to B or A or B will be equal. So directly you can find. So solution is one line. So since 10 is not equal to 8, so 10 plus 8 has to be N. Okay. So N is 18. Like this. And some other type of questions also people are like, they ask you question number 2. So suppose suppose 20 choose N square is equal to 20 choose N. Then what is N? Value of N क्या क्या हो सकता है? Zero, 1. So possible values of, okay,
n is r, ऑप्शंस बताइए। जैसे आपने एक बताया 0, b, 1, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है जी? What are possible values? फोर क्या? Hmm? 4. 4. Okay. 4 is also one. Okay. What are more? जीरो और वन। हाँ मतलब 3 ऑप्शन है, 0, 1, 4, और एनी मोर पॉसिबिलिटी आर देयर? Okay, so suppose I write here, suppose 5 also. So 5 will not be possible. Okay. So only you know how to solve. So like we have seen 20 cn square is equal to 20 choose n. So we have seen that when NCA is equal to NCB, then either A is equal to B or A plus B is equal to N. These are the form result. So this will happen, either A is equal to B or A plus B is N. So you have to consider both. So if you further continue, so this will be like n square minus n is 0. Here will be n square plus n minus 20. You can just factorize it. So you will see here n into n minus 1 is 0, or here you will see n minus 4 into n plus 5. This is 0. So 4 or minus 5. but a negative is allowed. So 0 or 1 or 4 or minus 5. So these are 4 possibilities they gave. But in NCR, n and r both are positive integers actually, right? So here we write at least non-negative integer. Here n is non-negative integers. So it's a whole number or non-negative integers. So n can take value more than equal to n has to be natural number actually. N will not be 0. So n has to be natural number, and r is more than equal to 0. R is integers. These are possible restriction. R is integer and r can be 0 actually. You may write 0 C0, that will be 1. So I think negative n is not allowed, right? So only answer will be these 3. So even if I write option as minus 5, let's say, still it will not be true, because here in NCR, n and r both are non-negative integers. So this will not be true. So they are basic questions. So this type of results will come in case of binomial theorem. When we will be solving, in the end you will get this, and then final answer will follow by this. So these are basic thing. Some formula like the total number of permutation of n distinct objects. So hidden is what? Total number of permutation of n distinct object taken all at a time actually.
So you are doing permutation of n distinct objects. You are arranging n object all at a time. So that, yeah, you know, I think it's a npn actually. So when you solve npn, it will be n factorial, right? So it's a permutation of n objects taken, and the hidden is a linear permutation. When we say permutation, it is actually linear permutation. So here it is permutation means we are considering linear permutation, means we are arranging objects on line. So it's a linear permutation. You know circular permutation, so that will make different answer. Permutation, like if I write total number of circular permutation, so circular permutation of n distinct object. So what is circular permutation? You want to arrange n object on a circle, like there are there is a circular table and there are chairs there. So in how many different way you can arrange n different objects or n different people? So क्या होगा formula इसका? So it is actually n factorial divided by n, which is n minus 1 factorial. So why do we divide by n? Because like the first person, the last person, they are adjacent to each other. So there are n different combinations, they lead to same counting. मतलब they are not different arrangement actually. जैसे मैं आपको बेसिक समझाना चाहूँ कि जैसे 3 एग्जाम्पल के लिए n को मैं 3 लेके चलता हूँ. सो इसका लीनियर परमुटेशन जो होगा, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ, है ना, linear permutation of 3 distinct objects is 3 factorial, which is 6. And what are that? So there are 3 chairs in line you want to arrange. So in that way, what you can do, है ना? So this is a linear permutation. And in the circular, you have a chair, like in circle, you want to make 3 people sit like this. So है ना, in this way, you can have like 1, 2, 3, 1, 3, 2. Okay. So you can make 6 combinations, right? 1, 3, 2, 1, 2, 3, या है ना, 2 से स्टार्ट कर लो, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1. These are 6 different possibility you can have on a linear permutation. So you are in, but on a circular, what you will do? So when you write 1, 2, 3, suppose I'm copying this. Now you have to tell which of them are exactly same. So ये 1, 2, 3 है, ठीक है. अब बताइए, सो लॉजिकली आंसर क्या होना चाहिए? सर्कुलर परमुटेशन का आंसर होगा circular permutation of 3 different objects. 3 people are sitting on a circular table. How many different way you can arrange them? So फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 फैक्टोरियल 2 ही आंसर होना चाहिए. सो बताइए इनमें से कौन कौन सा आइडेंटिकल है? ध्यान से देखो, जब आप सर्कल पे इनको बिठाओगे, सो विच आउट ऑफ देम विल मेक द सेम अरेंजमेंट? दे आर नॉट डिफरेंट. चेक करो. तो देखो 1, 2, 3, तो सर्कुलर में क्या होता है कि 1, 2, 3, 3 के बाद तो 1 ही है, तो यहाँ भी ऐसा ही है 2, 3, 1. सो दिस दे आर सेम. क्या हो रहा है? 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, बिकॉज इट इज सर्कुलर ना. सो लाइक 1, 2, 3. सो व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग हियर 2, 3, 1, व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग हियर 3, 1, 2, 3, 1, 2. So these 3 are actually same and these 3 are actually same. So they are not 6 different possibilities. They will be counted just once. And these 3, this and this will be counted once. समझ आ रहा है? So they are not 3 different. 1, 2, 3, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है. And in circular what happens? The end version is a adjacent of first person. So 1, 2, 3, then 3 के बाद 1 होगा. So 1, 2, 3, 2, 3, 1 and 3, 1, 2, they will make the same combination. So that's why we divide by 3, है ना? So these 3 make the same combination or same arrangement. So they will not be counted 3 different, they will counted once only. So that's why we divide by n here. So इसीलिए यहाँ 3 factorial को n 3 से divide कर दिया जाता है, तो यहाँ 2 factorial बचेगा. ठीक है, समझाने के लिए. So circular permutation में you will have n minus 1 factorial and in the linear permutation you have n factorial. ये just एक example के थ्रू हम देख रहे थे. ओके तो ये कुछ है. अब इसी में रिपीटिशन आ जाएगा. यहाँ तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है. नाउ यू नो अगर रिपीटिशन आएगा तो क्या होगा?
सो रिपीटेशन में क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ permutation of n objects in which, मान लो ऐसा होता है, in which r objects are identical and rest are different. So इसका आंसर भी आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी, राइट? या r की जगह k ले लो, so यहाँ k ले लेते हैं. So total number of permutation of n objects, they are not necessarily distinct, in which k objects are identical without repeating, they are repeating. So you will have answer n factorial and you will divide by just k factorial because k are identical. So arranging k of objects in a different way, it is k factorial way, that will not produce new combination or new arrangement. So that's why you have to divide by it. So when you arrange k object, k identical object, there are k factorial way, but they produce only one combination, one arrangement. So that's why they are not creating distinct possible counting. So they will be counted just once, and that's why we are dividing. So ये सब आप जानते हैं. Next में थोड़ा सा आते हैं. So तो ये बेसिक अभी मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी में आई थिंक यही यूज़ होगा मेनली. जब एक्सपेक्टेशन ये सब तो आगे आएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी में थोड़े से आगे आते हैं. तो अभी हम लोग मेनली बात करते हैं थोड़े प्रोबेबिलिटी सेंस में. सो वी स्टार्ट विथ, अभी जैसे हमने बेसिक कुछ देखा है, सेट्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, द बेसिक थिंग. देन हम थोड़ा आगे आए तो हमें क्या चाहिए होगा, थोड़े प्रोबेबिलिटी के सेंस में देखें. सो यहीं से स्टार्ट करते हैं मेनली प्रोबेबिलिटी में. सो द फर्स्ट वर्ड कम्स रैंडम एक्सपेरिमेंट. और आप थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम देख सकते हो. सो इन बाइनोमियल थ्योरम व्हाट हैपेंस, कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से. जैसे यहाँ से आपसे पूछा जाए कि NC1, NC2, चलो इससे पहले NC0, ये सब जो है, सो NC0, NC1, NC2, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी. NC0, NC1, NC2, NCN, ये किसके इक्वल आता है? फिर ऐसे ही आएगा NC0 का स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर, है ना? ये वैसे लिखो या यही बात है? सो इफ यू राइट NC0, NC1, इट्स द सेम थिंग ना. NCN, n चूज n, दे आर सेम थिंग. NC0 का स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर, NC2 स्क्वायर, NCN स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा? सो फर्स्ट में सबको पता ही होगा. 2n. सो ये तो आपका 2n होता है. और ये वाला 2n CN, 2n चूज n. ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है. एंड एक्चुअली कैसे आता है, अगर आपसे पूछा जाए हाउ कैन यू प्रूव दिस, सो व्हाट इज द वे. सो these two formula can be easily proved using binomial theorem, and हम लोग अभी इसको यूज करेंगे. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बाइनोमियल थ्योरम का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है और आगे भी यूज होगा. लाइक आपको फोर्थ मोमेंट निकालना होगा, फिफ्थ मोमेंट निकालना होगा. सो इन दैट केस यू मे नीड दिस बाइनोमियल थ्योरम. सो ये क्या कहता है बाइनोमियल थ्योरम? इट्स अ टू टर्म a plus b raised to power n, है ना, where n is some positive integer. So this formula you know, so directly लिखोगे तो summation n choose r, a की पावर r, b की पावर n minus r, and r can take value 0 to n. यही है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, कुछ और नहीं होता, यहीं पे बस q प्लस p आ जाता है या p प्लस q आ जाता है ना. a के जगह हम लोग p लिखते हैं, b के जगह q लिखते हैं. सो ये ऐसा हो जाता है. सो दिस लेड टू r फ्रॉम 0 टू n. n अब r लिखो या x लिखो वही बात है. n चूज r, p की पावर r, q की पावर n माइनस r, एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. टोटल मिलके 1 हो जाता है. सो दिस समेशन बिकम्स 1 इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड दिस इज द PMF. एक्चुअली यही PMF होता है ना. तो यहाँ से आप देखते हो कि ये क्या है, दिस इज समेशन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r फ्रॉम 0 टू n, एंड दैट बिकम्स 1. एंड यहाँ भी ये 1 ही है, p प्लस q इज 1, सो ये 1 हो जाता है. सो ये बाइनोमियल थ्योरम से आता है, मेनली इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना. तो
कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो, तब भी सेम आंसर आएगा। n चूज r a की पावर n माइनस r b की पावर r, ये भी आप लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल यू विल हैव सेम आंसर, है ना। एनसीईआरटी में देखोगे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। और इसके पीछे वजह क्या है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, दैट्स वाई दे आर सेम। ठीक है, तो ये तो हमारा बाइनोमियल थ्योरम में ये आता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम देखते हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ें आती हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड जब मैं बात कर रहा था इसको प्रूव करने का, तो ये जो पहला फॉर्मूला है ये कैसे आ जाएगा, तो इसमें जस्ट आप ए और बी दोनों को 1 रख दो, है ना। सो यू पुट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बी फर्स्ट फॉर्मूला। एंड दूसरा वाले के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2n कब आएगा, तो इसमें दो तरीके से इसको प्रूव करने के लिए ना आपको ये करना पड़ता है कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, इसका 2n को ओपन करना पड़ेगा और इसको 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n। मैं कह रहा हूँ इसका प्रूफ कैसे आएगा सेकेंड वाले का, तो इसका एक्सपेंसन लिखो, इसका एक्सपेंसन लिखो, इसका एक्सपेंसन लिखो, फिर इसमें कंपेयर करेंगे तो इसका प्रूफ इससे आ जाता है, बट प्रूफ की ज़रूरत नहीं हमें, तो बता रहा हूँ कैसे ये आता है। सो यहाँ से इन दोनों का अलग अलग फैक्टर करो, तो यहाँ ब्रैकेट में कुछ आएगा, ये आएगा, इसके बहुत सारे टर्म्स होंगे n+1 टर्म्स, यहाँ टर्म्स होंगे। अब इक्वल पावर वाले टर्म को कंपेयर कर लो, मेनली पावर n वाले टर्म को कंपेयर कर लो, तो यहाँ पावर n वाला टर्म ये आएगा और यहाँ पावर n वाला टर्म ये सब आएगा, इस तरह से। तो इसे प्रूफ आ जाता है। ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम का सिंपल फॉर्मूला है जो अभी यूज होगा आगे, है ना। इसी से जैसे 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, है ना, ये सब यूज होता है। सो आ जाएगा आगे, इसको देखेंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसका क्या डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, कैसे डिफाइन करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है जो कि रैंडम है, मींस व्हाट, When the experiment is unique, like we, the outcome is not constant. सो एक्चुअली Outcomes cannot be predicted. हाँ, so exact outcome you cannot predict in advance actually. So possible outcomes you know, but exact outcome what will be resulted after experiment, that cannot be predicted, है ना। So simple, an experiment, so in which all possible है ना, all possible results are known या all possible outcomes are known, outcomes are known, but है ना, but the exact outcome of experiment cannot be predicted, cannot be predicted in advance, है ना। है ना, this is called a random experiment. So there is an experiment in which you know what are possible outcomes, that you know these are possibilities, but you cannot surely tell that this will be the outcome of the experiment. So that's why it is random actually. Okay, so you examples, you know, we come across many examples already, we know in our lower classes we have seen, like tossing a coin, okay, rolling a die. rolling a die, right. So drawing a card, these are the basic examples we have gone through in school days actually, right. So drawing cards, so tossing a coin is a random experiment. Why? We know all possible outcomes, it's either head or tail, but exact result cannot be predicted. You cannot tell ki head will only come or only tail will come, you cannot directly tell. So these are possible outcome. Rolling a die, you know ki there are
outcomes 1 to 6, but you cannot tell exactly 1 will come or 2 will come. You cannot direct predict. Drawing cards, there are 50, you know, 2 options you have. Playing cards, I'm talking. So drawing a playing card. So drawing a card from a deck of 52 cards. So they are different, है ना? So they are different combination 52. So there are 4 suits, है ना? And 13 different type of cards like ace, king, queen, jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, so there are 13 different cards and all will have 4 suits, spade, है ना? Club, heart, diamond. So you know about cards. So that will be here. So you can name, for example, if you write ace, then what you want. So like this or different, you can color you make. So there are 32 total, 52 outcomes will be there. Or tossing a pair of coin, rolling a pair of dice, or some other experiment. Okay. So these will be experiment. Then we defined a sample space. These are some basic terminologies. So sample space. So without sigma field, we are discussing currently without measure theory. So sample space, you all know, right? Possible outcomes of a random experiment. Yes. So it is a set actually. So a set of possible, right? So a set of all possible outcomes. A set of all possible outcomes of a random experiment. Is a sample space. Then a word comes event. So what is event actually? Definition. It is a subset of the sample. This is simple. Subset, any subset, है ना? So a subset of a sample space is called event. So event is a subset of sample space. So we find probability of events, right? We find probability of event. So event is a subset of sample space. So how many, for example, we consider example. Suppose a pair of coin is tossed. So a pair of coin is tossed. So this is a random experiment, and the sample space omega, I will denote the sample space. So it's a HH, HT, TH, TT. That everyone know. So how many different events can be generated? How many events are there corresponding to this outcome? 4. Only 4? How many events can be made? These are outcomes. I think you are talking about 4 outcomes. Hai na? Yes. 6. There are 4 outcomes. How many events can be constructed? Eight. There are 4 outcomes, and total number of events are, so how many subset this sample space has? 2 raised to power 4, right? So any subset of a sample space is event. So as many subset of this set has, they are all events actually. So this has total, a set has 4 elements, it has 2 raised to power 4 subsets. So there are total 16. Total number of events are 2 raised to power 4, 16. So there are 16 events here, total number of events. What are those? You write all subsets. So phi is the subset of every set. Phi is also event, that is called impossible event. Then you can make singleton, this is an event actually. Then HT and so on, you can write the last omega itself. Every set is a subset of itself. So omega is also a event actually. Sample space is also one event because it is subset of itself by definition. See, if you have doubt, you ask.
Okay, so there are total. So when you define impossible event, so what is definition of impossible event, है ना? So impossible event, so simply generally we define event by e, so I will denote it by e, है ना? So जो मैं क्या करूँगा, it is denoted, it will be denoted by, so I will be denoting it by omega, and it is mostly denoted by e or any set notation you can take, है ना? So any subset is a set actually, so a b c something e f something, है ना? So mostly it is e I will write. So impossible event, so what will be the definition of impossible event? So it's a without probability. Okay, so probability is not needed in this definition. So if an event e is equal to phi, then we call, then e is impossible event. Okay, some people define ki impossible event has probability 0. It is not definition, it is theorem. So it is result. So like theorem is ki if e is impossible event, then probability of e will be 0. क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो क्या वो जरूरी है कि एम्प्टी ही होगी या इम्पॉसिबल ही होगी? नो सर। सो है ना, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है एक्चुअली. सो मेनली डिस्क्रीट सेंस में ओके है, कॉन्टिन्यूअस सेंस में दिक्कत होगा. सो लाइक व्हाट आई वांट टू से रिमार्क में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0 डज नॉट गारंटी, है ना, क्या होगा, डज नॉट गारंटी या डज नॉट इम्प्लाई, मतलब डज नॉट इम्प्लाई ई इज इक्वल टू फाइव, मतलब ई में भी, और है ना, ई में बी empty or may not be empty. It is not surely that it is phi only, right? So it does not imply E is phi. E may not be phi and still probability may be 0. So then next word comes sure event. So next is sure or certain. Certain event. So the definition is if an event E becomes equal to sample space. So if E has all that outcomes which is sample space has, so then it is sure event. If an event E is equal to phi, then we call it, then that event E is called sure event or certain event. Okay, and similarly, so we can repeat this statement. Just एक मिनट. तो इसमें थोड़ा एडिट कर देते हैं. सो इसमें ये होगा कि अगर ये श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, एंड सो ई इज श्योर इवेंट. ठीक है, सो ई अगर श्योर इवेंट है तो इट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी इज 1. ये ठीक है. प्रोबेबिलिटी 1 डज नॉट गारंटी कि इट इज सैम्पल स्पेस. डिस्क्रीट केस में ऐसा होगा कि इवेंट अगर डिस्क्रीट है, मेनली जब सैम्पल स्पेस अनकाउंटेबल हो जाए उस केस में ज़रूरी नहीं एम्प्टी सेट होगा. ठीक है, जब आपका डिस्क्रीट का मतलब होता है, थोड़ा सा सेट अभी पढ़ रहे थे, इसमें थोड़ा सा वापस जाता हूँ फिर इस पर आते हैं. जैसे सेट अभी पढ़ रहे थे ना, तो मेनली हम लोग ये वर्ड यूज़ करेंगे डिस्क्रीट सेट, कॉन्टीन्यूअस सेट, राइट. यहाँ पे थे हम लोग सेट में, जैसे इससे पहले सेट देख रहे थे ना, तो जैसे एक वर्ड आएगा डिस्क्रीट सेट. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट सेट? सेट में जैसे हम लोग अक्सर वर्ड यूज़ करेंगे डिस्क्रीट सेट. इसी डिस्क्रीट सेट से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बना है, कॉन्टिन्यूअस सेट से कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बना है. सो डिस्क्रीट सेट एंड दूसरा जैसे होगा कॉन्टिन्यूअस सेट, ये वर्ड यूज़ करूँगा. तो डिस्क्रीट सेट का एक्चुअली मतलब है, दूसरा नाम लिखेंगे तो इसका दूसरा नाम है काउंटेबल सेट एक्चुअली. ठीक है,
डिस्क्रीट सेट दूसरा नाम है काउंटेबल सेट, और इसका नाम क्या है, अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, अनकाउंटेबल सेट। अब ये काउंटेबल सेट में क्या क्या आता है, काउंटेबल सेट के अंदर आएगा फाइनाइट सेट एंड काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, और इसके अंदर एक ही सेट आएगा एंड दैट इज अनकाउंटेबल सेट या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो ये होता क्या एक्चुअली, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट? So finite set, you know, the set which has finite number of elements. Empty set is also a finite set. ठीक, काउंटेबली इन्फिनाइट सेट का डेफिनेशन क्या होगा, कोई बताओ, किसी को आइडिया है? हाउ डू यू डिफाइन काउंटेबली इन्फिनाइट सेट? So we have to define, right? What is the definition of uncountably infinite set? An uncountable set सेम है, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। काउंटेबल जब लिखेंगे तो उसमें दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। सो जैसे इसके एग्जाम्पल लिखोगे आप, सो लाइक इसमें एग्जाम्पल है, इसके अगर कुछ एग्जाम्पल लिखे तो एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, है ना, मान लो 2-3 एलिमेंट है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल लिखोगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये होगा। इसके एग्जाम्पल लिखोगे सेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल्स जो भी होते हैं जहाँ ए बी डिफरेंट है, तो इस तरह के जो भी इंटरवल्स होते हैं वो सारे इंटरवल इसमें आएंगे। फिर heights of the students, हाँ, है ना, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्यू डैश, ये अनकाउंटेबल सेट, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ अनकाउंटेबल सेट। सो काउंटेबल ये है ना, ये सब वर्ड आएगा अभी, है ना। सो रैंडम वेरिएबल क्या, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, क्या, सैम्पल स्पेस टू रियल नंबर। सो जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज डिस्क्रीट सेट आएगा वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, फंक्शन हैज रेंज, डोमेन कोडोमेन रेंज। सो जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज कंटिन्यूअस सेट होगा, ये अनकाउंटेबल सेट होगा, सो दैट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो ये थोड़ा आएगा, तो मैं काउंटेबली इन्फिनाइट का डेफिनेशन लिख देता हूँ। यू नो, सेट ऑफ रियल नंबर इज ऑल्सो इन्फिनाइट, set of natural number is also infinite, but they have different cardinality. Cardinality means number of elements in the set. Mathematically natural number and integer has same number of sets. जितने natural numbers है उतने ही integers है mathematically, ठीक है। आपको ऐसे लग रहा होगा natural number integer तो ज़्यादा है, तो नॉर्मल सेंस में, बट मैथमेटिकल सेंस में इक्वल है, उसको मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। सो इवन रैशनल नंबर, जितने नेचुरल नंबर्स हैं उतने ही इंटीजर्स हैं, उतने ही रैशनल नंबर्स हैं, बिकॉज दे हैव सेम कार्डिनलिटी। बट यहाँ पे जितने इरेशनल नंबर है उतने ही रियल नंबर्स हैं, उतने ही इंटरवल्स में नंबर्स हैं। सो ये मैथमेटिकल सेंस में ऐसा है कार्डिनलिटी, उसका एक डेफिनेशन है। जैसे आप जानते होंगे कि मैं अगर एक दो रिजल्ट दिखा दूँ बेसिक, कि जैसे कि इफ़ f फ्रॉम a टू b, तो थोड़ा सा वो फंक्शन भी रिवाइज करना पड़ेगा, लोअर क्लास जरूरत पड़ेगी, है ना। सो f कोई फंक्शन है मान लो a से b में, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। सो बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स 1 1 and on to both, right? So then it implies कि number of element in a is equal to number of element in b, ये भी वन वे स्टेटमेंट है। सो इफ f a to b is बाइजेक्टिव फंक्शन देन a and b will have same element। तो आप ऐसे फंक्शन बना सकते हो जहाँ पे नेचुरल नंबर से, है ना। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर विच इज बाइजेक्टिव, ठीक है। ऐसा फंक्शन आपको मिलेगा जो बाइजेक्टिव है। दिस प्रूव्स कि नेचुरल नंबर एंड इंटीजर हैव सेम कार्डिनलिटी, दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो बाइजेक्टिव कैन बी मेड। इवन, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रैशनल में भी आप बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हो। सो इसके लिए थोड़े से प्योर मैथमेटिक्स की बुक आपको देखनी है, दैट कैन बी डन। जबकि देर इज नो बाइजेक्शन बिटवीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू आर, देर इज नो बाइजेक्शन, सो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं मिलेगा। बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसे लिख लो।
So there is no function that can, there is no function from natural number to real number which is bisective. तो ऐसा नहीं हो सकता. दैट्स वाई नेचुरल नंबर और रियल नंबर की कार्डिनलिटी अलग अलग है. दोनों में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बट देयर आर टू टाइप ऑफ इन्फिनिटी, है ना. सो वन इज कार्डिनलिटी, क्या इसको बोलते हैं, एलिफ नॉट, एक ही कंटिन्यूम, है ना. इस तरह से नोटेशन है. सो इसका जो कार्डिनलिटी कुछ नाम देना है तो इसका कुछ एलिफ नॉट लिखा जाता है, और इसका कंटिन्यूम स्मॉल सी लिखते हैं, इसमें कुछ एक्स नॉट जैसा कुछ लिखते हैं. नोटेशन है वैसा. So they have different cardinality. They are infinite sets, but they are different kind of infinite set. This is countably infinite. This is uncountably infinite, and they are two different infinite. ठीक है. So anyway, तो हमको कहाँ पे थे? So ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जरूरत पड़ेगी. ठीक है. ओके. इसके बाद जो आता है बेसिक, अगर हम डिस्कस करेंगे, इवेंट हो गया, देन प्रोबेबिलिटी पे अगर आएंगे, so व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. अगर आप क्लासिकल डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या होता है इसका डेफिनेशन? हाउ डू वी डिफाइन क्लास डेफिनेट प्रोबेबिलिटी क्लासिकली? सो व्हाट इज क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? Number of favorable outcomes by total number of favorable outcomes. जी जी, है ना. सो इससे आ जाएगा. सो लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है ना. सो दैट यू मस्ट बी नोइंग. सो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. So it is actually, so let omega be a sample space, ठीक है, containing finite number of outcomes. ठीक है. So first restriction is कि sample space must have finite number of outcomes, and the second restriction is in which all outcomes are equally likely. All outcomes are equally likely. ठीक है. जितने outcomes होंगे सब equally likely होंगे. So all outcomes are equally likely. Okay. So omega be the sample space containing finite number of outcomes in which all outcomes are equally likely, है ना. तो एक तो रेस्ट्रिक्शन हुआ कि फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम होने चाहिए. दूसरा रेस्ट्रिक्शन है कि ऑल आउटकम मस्ट बी इक्वली लाइकली. सो ऑल आउटकम हैव इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग अकरेंस, है ना. देन probability of an event E. So probability of an event E is given as, so we write probability of E. Yes, you know, we have seen this from school days, number of favorable outcome upon total number of outcomes. So it is, but you cannot use always, है ना, number of favorable outcomes up, है ना, to E upon total number of outcomes in sample space, है ना. So you can write number of elements in E upon number of, या ऐसे भी लिख सकते हो कार्डिनलिटी ऑफ E अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ S. S तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, सैम्पल स्पेस को मैं ओमेगा से लिख रहा हूँ, तो
है ना. सो कार्डिनलिटी ऑफ ओमेगा, ये मॉड में अगर कोई सेट लिखा है मतलब कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. सो वैसा है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिकल, दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन. सो दिस है ना, इट कैन नॉट बी अप्लाइज एवरीवेयर. सो यू हैव टू है ना पर्टिकुलर दैट these two conditions must be satisfied, then you can apply this. ठीक है. जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए. सो जैसे लैंग्वेज उतना लिखने के बजाय मैं जस्ट ऐसे समझा देता हूँ. जैसे एक एक्सपेरिमेंट है. सपोज आपको बोला गया कि लाइक एक बार कॉइन को टॉस करो, अगर हेड आता है तो फिर से टॉस करना एंड यू स्टॉप हेयर, बस एक बार में. एंड अगर टेल आया तो यू रोल अ डाई. सो अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ हेड कम्स यू टॉस इट अगेन, इफ टेल कम्स थ्रो अ डाई एंड गेम स्टॉप्स, है ना. यू डोंट कंटिन्यू दैट. सो सैम्पल स्पेस उस केस में क्या आएगा. सो इफ हेड कम्स यू टॉस इट अगेन ओनली, है ना. इन द फर्स्ट टॉस इफ हेड कम्स यू टॉस इट वंस ओनली, देन नो फर्दर. सो एच टी हो सकता है. अगर पहले थ्रो पे हेड आया तो फिर से कॉइन को टॉस करोगे तो दूसरी बार में या तो हेड आएगा या टेल आएगा. अच्छा, अगर टेल आया पहली बार में सो यू रोल अ डाई. सो डाई पे क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, टेल के बाद 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है. ऐसा है. So this is a sample space of that experiment. You toss a coin, if head comes, toss it again. If tail comes, throw a die. And only you throw only, and not don't repeat that experiment. So this is a possible outcome. And now suppose एक event मैं ले लेता हूँ, जैसे ये event है. So event is, let's say मैं लिख दिया HH और यहाँ लिख दिया मान लो T2 लिख दिया. तो event क्या होता है, subset of sample space. So this E is a subset of sample space omega. So question will be what is probability of E, है ना. So blindly we cannot say कि okay E has 2 outcome, total 8 outcome, तो ये गलत हो जाएगा, right. So this will be wrong answer. ठीक है. So this is a wrong answer actually. So आपको समझना होगा कि ये गलत है. क्यों गलत है, because finite outcome तो है बट क्या इक्वली लाइकली है. तो पहला कंडीशन ओके है बट क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं. डू यू थिंक कि दिस हैज सेम चांस एज दिस, आपको लग रहा है ऐसा. आंसर इज नो. सो आंसर होगा क्या. सो आंसर विल फॉलो फ्रॉम एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन. मैं अभी के लिए ऐसे लिख देता हूँ. सो इट सेज कि यू डोंट जस्ट काउंट द फेवरेबल आउटकम, यू फाइंड प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली. सो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन सेज यू फाइंड प्रोबेबिलिटी, एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन कल डिफाइन करेंगे या आज अगर टाइम रहा तो. सो दिस वे यू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम एंड ऐड देम. तो अकॉर्डिंग टू दैट वहाँ से ऐड करो. एच एस का मतलब क्या, पहले टॉस पे हेड आया, दूसरे टॉस पे भी हेड आया, तो पहले टॉस पे हेड, दूसरे टॉस पे भी हेड. प्लस T2 का मतलब पहले टॉस जो रोल किया था आपने, पहले क्वाइन पे टेल आया तो हाफ, फिर डाइस को रोल किया था, डाइस पे 2 आया, तो डाइस पे 2 आने का क्या चांस है, 1/6. तो इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी आएगी. तो इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4 प्लस 1/12. तो ये आ जाएगा आई थिंक 4/12 टोटल, राइट. सो जो कि 1/3. सो 1/3 ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, ये 1/4 आ रहा था जो कि गलत आंसर था. ये सही आंसर है. चेक करो, कुछ क्वेरी है तो पूछो, है ना. सो डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं करना है कि सीधा नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड कर देने हैं. यू हैव टू फर्स्ट चेक कंडीशन. सो दैट्स वाई क्लासिकल डेफिनेशन कैन नॉट बी अप्लाइड एवरीवेयर, है ना. इट इज अप्लाइड वेयर दिस एंड दिस कंडीशन आर सेटिस्फाइड, दीज टू कंडीशंस. एक और इस पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है यहाँ तक. सो एक क्वेश्चन और देख लो. जैसे क्वेश्चन 2 है कि a coin is tossed until we get a head. ठीक है. तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, यू टॉस्ड रिपीटेडली until you get a head, तब तक. So the possibility is you may get head in the first toss, or you may get head in the second toss, or you may get head in the third toss, you may get head in the fourth toss, and it will keep running. There are infinitely many outcomes. Now if I give you event like कि चलो भाई H ले लो और ये TTH ले लो एग्जाम्पल के लिए.
So it is a subset of sample space. You know, any subset of sample space is event. So what is probability of this? So question is, what is probability of E? So can you write there are 2 out of infinity? So ये तो 0 हो जाएगा. तो again this is wrong answer, right? This is wrong answer. So ना यहाँ पे क्या हो रहा है कि there are infinity many outcome. Classical definition cannot be used because it says कि classical definition use करने के लिए finite number of outcome होने चाहिए. But यहाँ तो infinite है. So again you will use the axiomatic definition and you will find individual. मान लो instead of 2 outcome, if I say मान लो 3 outcome ले लेता हूँ just थोड़े क्वेश्चन को अलग बनाने के लिए. HH ले लिया मान लो, TTH ले लिया, TTTH ले लिया मान लो, ऐसा ले लिया, 3 आउटकम ले लिया. तो क्या यहाँ 3 होगा? तो नो, स्टिल इट इज रॉन्ग है ना. तो यहाँ पे क्या आएगा? सो यू हैव टू फाइंड आउटकम ऑफ इंडिविजुअल, ना यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल आउटकम्स, देन यू ऐड देम इस तरीके से. तो यहाँ से एक बार टॉस किया, पहली बार में हेड आ गया तो हाफ चांस है. टॉस किया, 2 बार टेल आया, 1 बार हेड आया. तो अभी तो कुछ नहीं लिखा हमने, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी लेते हैं. तो 1/2 का क्यूब, यहाँ 1/2 की पावर 4 आ जाएगी. तो यहाँ से 1/2, 1/8, 1/16. तो 16 एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 11. तो 11/16 आ जाएगा. तो दिस इज द आउटकम. ठीक है. सो यहाँ तक कोई डाउट है? पूछो. सो टुडे वी हैव जस्ट डिस्कस्ड बेसिक थिंग. तो अभी आप देखोगे सिलेबस कहाँ से स्टार्ट है. आई हैव नॉट स्टार्टेड सिलेबस. सिलेबस से स्टार्टिंग विथ एक्सोमेटिक डेफिनेशन. सो ये कल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो अभी हम लोगों ने जो भी आज डिस्कस किया, दे आर ऑल बेसिक थिंग दैट यू माइट हैव सीन ऑलरेडी. ठीक है. सो टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. सो व्हाट इज एक्सोमेटिक डेफिनेशन, है ना. सो हो सकता है कल क्लास शायद ना हो. कल एक सेशन है जैम का, जो पुराने बच्चे हैं ना उनका एक सेशन है 9:30 बजे से. तो मेरी मंडे को क्लास होगी. कल संडे है ना, तो अभी थोड़ा सा आप बेसिक रिवाइज कर लो. सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू, है ना. सो जस्ट रिवाइज बेसिक थिंग फ्रॉम 11th-12th, है ना, ग्रेजुएशन लेवल पे. सेट थ्योरी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, काउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आ जाएगा. देन सम कैलकुलस थिंग दैट विल बी यूज्ड लेटर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना. यू कैन रिवाइज बेसिक क्लास 11th-12th वाला जो भी पार्ट है. प्रोबेबिलिटी क्लास 11th-12th का जो प्रोबेबिलिटी है वो रिवाइज कर सकते हो. सो दैट will help you later to understand easily, otherwise थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है. ठीक है ना. तो ये हम स्टार्ट करेंगे, अभी मंडे से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. या अगर कल क्लास होगी तो ग्रुप में आ जाएगा. मुझे लग रहा है शायद नहीं हो पाएगी, बट अगर होगी तो ग्रुप में आ जाएगा शेड्यूल. ठीक है. मे भी हो सकता है 1.5 घंटे का दोनों बैच कर देंगे तो शायद हो जाएगा, बट ग्रुप में आ जाएगा. अभी के लिए थैंक यू. सो विल इन्फॉर्म इन ग्रुप. ओके. या सर वो आप जैसे फंक्शंस का बोल रहे हैं ना, तो फंक्शंस मुझे रिवाइज करना था क्योंकि कुछ ऐसे ध्यान में नहीं है, तो वो कहाँ से पढ़ सकते हैं सर? हाँ, जैसे बेसिक के लिए ना, जैसे फंक्शन आप बोल रहे हैं,